Khurana from the Department of Physiotherapy and Diagnostics. Today we are going to discuss about the pelvimetry for the medical students. What is pelvimetry? It is the measurement of pelvic diameters. Now let's see about the bony pelvis. This is a specimen of bony pelvis. We have two hip bones behind the sacrum. This is formed by two hip bones and the sacrum posteriorly. Now let's discuss the plane and the axis. Firstly, we have two pelvis, true pelvis and the false pelvis, which is demarcated by the pelvic brim. What is pelvic brim? The pelvic brim is formed by the sacral promontory, ala of the sacrum and the linea terminalis, both sides. What is linea terminalis? It is the line contributed by the arcuate line, the pelvic pecten pubis and the pelvic crest. So the pelvic brim divides this pelvis into the false pelvis, which is the greater pelvis, and below the pelvic brim there is a lesser pelvis, or we can say that the true pelvis. Now the two diameters existing in the greater pelvis are first the intertubercular diameter. The intertubercular diameter extends from the ASIS of the right hip bone and the ASIS of the left hip bone, and it generally measures as a 20 centimeter. When we put the scale on the right ASIS and measure it from up to the left ASIS, it is the approximately 21 centimeter. And the second diameter in the false pelvis is intercristal diameter. Intercristal is a distance between the tubercle on the iliac crest of the one side and the tubercle on the iliac crest on the opposite side. When we put the scale on the one in tubercle and taking the measurement, it is approximately 23 centimeters. So intercristal diameter approximately it is 23 centimeters, and interspinous diameter it is approximately 21 diameter. So the two diameters existing in our false pelvis. Now let's see about the pelvic diameters of the lesser pelvis. Firstly, you know about the lesser pelvis. Lesser pelvis, we have three forms. The pelvic inlet, the brim itself is the pelvic inlet, and this is the pelvic outlet. The pelvic outlet and pelvic inlet, the area in between is known as pelvic cavity. So let's discuss about the diameters in the pelvic inlet. So we have three diameters: anterior to posterior, anterior posterior diameter, the transverse diameter and the oblique diameter. Now let's discuss about the oblique diameter of pelvic inlet. The pelvic inlet, when you see the SI joint of right side up to the pubic eminence of the left side, this makes the line diagonal. So this is the diagonal diameter of our pelvic inlet, and when we measure this distance, put the scale on your right SI joint up to the left pubo eminence, it is approximately 12 centimeter. When you see, this is measured approximately 12 centimeter, both sides. You can measure both sides. So we have 12 centimeter are diagonal diameter in our pelvic inlet. Now what is the transverse diameter? Transverse diameter is the widest diameter in our pelvic inlet. जो आपका broadest part है वहाँ पे आप measure करेंगे scale से. When we put the scale in the broader aspect of inlet, it measures about 12 centimeter. So this is our wider place, and the transverse diameter
it is about 12 centimeter. Now let's talk about our anterior posterior diameter. Anterior posterior diameter, we have anterior conjugate. Anterior conjugate is formed by the distance extended from the superior margin of the pubic symphysis up to midpoint of the sacrum. Let's measure the diameter. When we put the scale on the anterior upper boundary of the pubic symphysis up to the midpoint of sacral promontory, this is normally 11 centimeter. 11 centimeter is the anatomical conjugate. In anterior posterior diameter, we have another two diameters known as obstetrical diameter and we have diagonal diameter. Obstetrical diameter हम देखेंगे the distance between the inferior surface of the pubic symphysis up to sacral promontory. When we put the scale on the anteriorly midpoint in the inferior surface of the pubic symphysis up to the sacral promontory, so it is nearly 0.5 less than our anatomical conjugate. तो हमारा एंटीरियर एनाटॉमिकल कंजुगेट था 11 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर का 0.5 माइनस करेंगे तो हमको डिक्टेट होगा हमारा ऑब्स्टेट्रिकल डायमीटर. एंड ऑब्स्टेट्रिकल डायमीटर हैज़ द इटसेल्फ इज ए सिग्निफिकेंस बिकॉज जब हमारा फीटल पार्चुरेशन होता है तो फीटल का जो हेड है एक्चुअली यहाँ पे से ही ट्रैवर्स होता है. एंड द थर्ड डायमीटर इन आर एपी डायमीटर ऑफ इनलेट इज द diagonal diameter. तो diagonal diameter हम observe करेंगे it is demarcated from the distance between the inferior margin of inferior surface of आपका pubic symphysis up to the sacral promontory. तो हम अगर मेजर करेंगे sacral promontory से और यहाँ तक हम मेजर करेंगे तो it is 1.5 हम ऐड करते हैं एनाटॉमिकल कंजुगेट से. तो एनाटॉमिकल कंजुगेट आपका 11 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट आता है और 11 में हम 1.5 मेजर ऐड करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर जो हमारा ऑब्जर्व करा जाता है एज ए डायगोनल डायमीटर ऑफ द पेल्विक इनलेट. अभी हम बात करेंगे कि कोरोनल प्लेन में जब हमारा लेट्स सी द प्लेन्स एंड एक्सिस ऑफ पेल्विक इनलेट. So when we put our bony pelvis in an anatomical position in such a manner, the ASIS of both sides and the pubic symphysis lies in the same coronal plane. तो इस हिसाब से हम अगर देखेंगे कि हमारा जो anatomical plane है it is more commonly the forward and downward. तो this is the plane of our inlet. एक्सिस की बात करें इसी प्लेन से जब हम आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलरली तो जो आपका इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन है जो फॉरवर्ड एंड है उसका दैट इज ऑन योर अम्बलाइकस एंड द लोअर एंड इज डायरेक्टेड ऑन यूट्रस. दिस इज द एक्सिस ऑफ योर पेल्विक इनलेट. तो आज हमने जो डिस्कस किया इट इज़ द डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट एज वेल एज डायमीटर ऑफ आर ग्रेटर पेल्विस. आप एक बात और ध्यान रखें, कभी कभी हम पेल्विक इनलेट में एक और डायमीटर काउंट करते हैं दैट इज़ आर एक्सटर्नल डायमीटर. एक्सटर्नल डायमीटर पेल्विमेट्री में बहुत कम यूज़ होते हैं विच इज़ मेजर्ड एज अ डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस या एंटीरियर पोर्शन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस अप टू L5 का जो स्पाइनस प्रोसेस है उस तक. अब आप मेजर करेंगे तो इसमें आपका बोन एंड अदर सॉफ्ट टिश्यूज़ भी इंक्लूड होते हैं, इसलिए हम कभी कभी इसको पेल्विमेट्री में यूज़ नहीं करते. तो अगर मेजर करेंगे तो हम L5 की स्पाइनस प्रोसेस से लेके आपका एंटीरियर एस्पेक्ट मिड पॉइंट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस इट इज़ मोर जो आपका राउंड अबाउट आता है 19 सेंटीमीटर. जो आपका एक्सटर्नल डायमीटर है दैट इज़ रफली अराउंड 19 सेंटीमीटर. फिर से आप ध्यान रखें कि एक्सटर्नल डायमीटर पेल्विमेट्री में बहुत कम यूज़ किया जाता है.
अच्छा, पेल्विमेट्री जो हमने ये डायमीटर्स देखे, इसका सिग्निफिकेंस हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये आपका मेडिको लीगल केसेस हो, ऑब्स्टेट्रिकल केसेस हो, रेडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसका रहता है। इसके अलावा एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडीज़ में भी हम पेल्विमेट्री यूज़ करते हैं। तो थैंक यू, नमस्ते।